टीएनसी बदल रहा है। टीएनसी भगवान के रंग में रंग रहा है। टीएनसी लाइव अब है टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल। नमस्कार, मैं राघव टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि हमारे भगवान श्री रजनीश 21 मई 1981 को आज ही के दिन अमेरिका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। तो आज उस दिन की घटनाओं को लेकर के, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है माँ आनंद शीला, जो फाउंडर एंड प्रेसिडेंट रजनीशपुरम। तो माँ आनंद शीला, प्रणाम, स्वागत है आपका माँ हमारे इस प्रोग्राम में। Pranam Raghav and pranam to all your viewers. जी माँ, तो हम आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को सबसे पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। तो गुड न्यूज़ जो है वो हम यहाँ पर स्क्रीन पर अभी शेयर करने जा रहे हैं, और ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शकों, जो हमारी टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल का जो परिवार का हिस्सा है, उनके बगैर ये संभव नहीं था। और इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है आप सभी लोगों को जाता है। तो ये आप सबकी स्क्रीन पर हमारी तरफ से बेहद बड़ी और खुशखबरी, 6000 सब्सक्राइबर आज हमने पूरा कर लिया है। इसमें डेट देखेंगे 31 मई 2022 की है, और टीएनसी का ये जो बेहद खूबसूरत सर्टिफिकेट है यूट्यूब की तरफ से दिया हुआ, ये आपके सभी के सामने है। जी माँ। Congratulations, Raghav. थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि माँ हमारे साथ में है और हम पूरे घटनाक्रम को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि भगवान श्री रजनीश जो है शायद पहली बार उस दिन हवाई जहाज में बैठे थे। ये भी बहुत खूबसूरती थी। तो माँ, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी, या क्यों अमेरिका जाने को लेकर के बात हुई, और कैसे भगवान ने आपके आपके ये कार्य सौंपा, और फिर कैसे आपने इस पे जतन और प्रयत्न किया, कैसे सजेस्ट किया आपने, और क्यों सजेस्ट किया अमेरिका? Bhagwan wanted to create a new commune for years before this event happened. Lakshmi, together with Lakshmi, I as a support were looking all over India appropriate land or residence for Bhagwan. It was extremely difficult to find it while we were going through political emergency, and to sell and buy buildings or land was impossible. Still, Lakshmi tried her best to find a place, didn't work out. Then one day, while working with Bhagwan, I said to Bhagwan, why don't we go to US? I'm sure US we will find enough land and we will find it quickly. It was my lucky day. He said, okay, Sila, you arrange. For him, just to say, Sila, you arrange, was a present for me to do something for Bhagwan. I was so elated, so delighted that he accepted this possibility. And from that moment, he said, you have
2 months to organize it for me to take it out of India. In the moment, I didn't know what a job it was to take someone like Bhagwan out of one place to another. Even to take him from Pune to Bombay can be very risky and dangerous, because people can do dumb things when they are overwhelmed. And wherever Bhagwan went, people were an emotional wreck, overwhelmed. To touch him or to have word with him, it is all understandable also, but it is a risk. And this risk I had undertaken to move Bhagwan. It was a moment where I could not make even a smallest mistake. If I make a mistake, can be very dangerous for Bhagwan. And I had 2 months to organize Bhagwan to move to America, to organize where he will stay. With his public knowledge, how public want him, we could not put him in a hotel. That would be not at all possible. So we had to create a place where suitable for Bhagwan and where Bhagwan would be comfortable without being disturbed by the public. So we bought a castle in New Jersey. In this castle, we prepared the renovations to Bhagwan's need, and we decided to take Bhagwan. Bhagwan didn't have a passport. He needed a passport. He needed a visa to enter US. And all this organization was under my responsibility. I had to manage it. And we had to keep at the same time sannyasins, Bhagwan's people, quiet, because they would be the first one to bring danger to Bhagwan with their enthusiasm. For them to know where Bhagwan is going, they would go ahead of Bhagwan and disturb the whole process. So we had to keep this secret from them too. Today, I can say that we managed it well and took Bhagwan without a single scratch on him. Yes. All the way to Oregon, we took him. यस माँ, एक सवाल मैं बीच में पूछना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बताया कि भगवान के पास में इवन जो है पासपोर्ट भी नहीं था, तो उनका पासपोर्ट भी आप ही ने बनवाया, उनका वीजा आपने करवाया। तो मैं उस बारे में भी, और थोड़ा सा अगर हो सके तो आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि सभी लोग और थोड़ा बेहतर समझ पाए। We had a friend, and now I forget his name, but he used to help sannyasins get their visa and get their passport problems solved. I connected with him, explained to him how dangerous it is for the story to go out. But he proved to be very trustworthy. And he then organized for Bhagwan's passport. And the visa for Bhagwan, I personally organized with American Embassy, with the help of a lobbyist in Washington, D.C., whom we had paid money
to organize a visa telex from Washington, D.C. to Bombay American Embassy, and they granted it. And that was also a Parsi lady who had arranged it for it. And she wanted once to see Bhagwan. And I promised her that Bhagwan will see you. And the day Bhagwan left and came to Manu and Hansa's house where we had kept him there to rest, that lady came and Bhagwan wished her and gave her his blessings. So it was the moment that it must happen. And it did happen. What is important is for everyone to know whatever was happening around Bhagwan felt like it was pre-planned. And nothing was pre-planned. As we went step by step forward, it was like the jungle of bureaucracy, jungle of law started just opening up like a lighted path in front. Bhagwan's passport also came at a time earlier than the time the passport office had said they would give it. And the person who had helped, I don't know if he's alive still, but I take this opportunity to say thank you. Sorry that I have forgotten your name, but name is not important for me. What you did to assist me and assist all sannyasin and to take Bhagwan out of India in those days, which was so vital because Bhagwan's health was suffering. And I thank everyone who had participated in small or big way to through this process of taking Bhagwan from Pune to US. I include in it all sannyasins. I include in all non-sannyasins. And I include all the well-wishers of Bhagwan who made it possible with their wishes to help this mammoth job that I was given to take Bhagwan out of India. It was my first big assignment from Bhagwan, I would say. And I was able to manage, and I thank Bhagwan for his training and courage that he had given me, the love he had offered me, that gave me the ability to move forward without fear. We left around 2:00 in the afternoon, so Bhagwan didn't have to wait too long in Bombay with the fear of the allergies that he would get in Bombay air. I drove him myself. In the car I was driving Bhagwan and Vivek. There was an escort
in the front, escorting the back of our car. And we moved on. We stopped a short minute to have a drink of water. But we had all the water and necessary things that for Bhagwan and for us in the car with us. Vivek had organized all the necessary household things for Bhagwan, his clothing, etc. And I had organized safe passage, bureaucracy and law to take Bhagwan out of there. We drove Bhagwan directly through tarmac into the plane. Before that, we must have waited about 4 or 6 hours in Manu's house, Hansa's house, and then because their house was the nearest to the airport, Bombay Airport. And we flew Pan Am 002. Or the Pan Am 001, one of the two, but doesn't matter. It was 747 Pan Am flight. 747, the make of the plane was jumbo. And we had reserved for Bhagwan the complete upper deck. So Bhagwan is not disturbed. We had draped the whole upper deck and arranged with the airline to dress it in white bedsheets that we had brought with us. So Bhagwan didn't have to sit on the seats of other people's use, plus to avoid smell, so he's not affected with his allergies and start asthma problem. On the economy, there were 15 other people were sitting who also flew with us, sannyasins. And they were all very hardworking sannyasins who had needed this little present of traveling with Bhagwan. It was also for his security, Bhagwan's security. So planned was. I always wanted to serve Bhagwan a glass of champagne. And what could be a better moment than this to serve Bhagwan champagne? So stewardess was going to serve, and I took the champagne bottle from her hand, and I poured the glass for Bhagwan on his dinner plate. The champagne. Bhagwan looked at me very curious and said, Sila, my Madhubala? I was almost gone in ecstasy. I was totally blown over when he called me his Madhubala. And then he took a sip of it and passed me the glass for me to have a drink with. I took a sip. With his permission, I brought that glass to 15 sannyasins who were sitting in economy, to each one to take a little sip of it. It was such a joyous moment
that I wanted to share with all of Bhagwan's people. Exactly that photo. This is the picture. Yes, ma'am. Yes, exactly the picture. And you see the smile on his face. Ah, it was a moment of my life. And we had filled the whole aeroplane with so much joy and pleasure with our own joy. And then we traveled like this all the way to New York. And there too, the doors opened up by themselves. I didn't have to take Bhagwan through a normal immigration immigration where thousands of people come on a daily basis. I was able to manage it through the side door to take Bhagwan out of it. And his Rolls Royce was waiting there to be driven to Kessel. We arrived at the Kessel, and all the people who had renovated Kessel for Bhagwan with diligence, with simply their love for Bhagwan, they put all in that renovation. And they were sitting very silently. And as Bhagwan's car came in, a couple of musicians who were part of the renovation team started playing music. And Bhagwan sat among us. And then after half an hour, we took Bhagwan into his apartment in the Kessel. So Vivek managed to settle Bhagwan in the Kessel, and I went straight to my office where I had to take care of some things so that Bhagwan is well taken care of it on his arrival, which he did. We managed royally everything that was necessary to make Bhagwan comfortable, happy. And finally at 12 o'clock or the 11:30, quarter to 12, I finally come to bed after Bhagwan has retired. Vivek comes down and says, Bhagwan wants to see you. I had just laid on the bed and he says, Bhagwan wants to see you. Okay, I put on my bathrobe, go up to see Bhagwan in his apartment. And he wants to know, when am I going to go look for a land? I say, oh my God, I have just arrived. I haven't even hit the bed yet. And he wants me to, I say to him, I need few days here to organize, and then I go. And he sat there full of energy, telling me all the things I have to do when I go look for land. And Bhagwan never wanted me to make notes. So when Bhagwan speaks, I have to listen to it with such attention that it is impregnated in my brain, what he says.
And like that, it went on for a long time. Maybe it was not so long, but it felt like eternity because I was so tired from the whole responsibility of transporting Bhagwan, and also days before working in and out, late hours, and doing things that were necessary for Bhagwan. But that's how we worked. That's how he worked. He was a demanding boss. And I didn't want to fail him. So every demand from him became my challenge. And today I can sit here at the age of 72 and tell you how proud I am that I survived him and fulfill his all pleasures, demands, and whatever comes with it. Raghav, Yes, Ma. you And have to it ask was me a question now. यस माँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास में बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें मैं जानना चाहूंगा माँ कि उस दिन आपके साथ में फ्लाइट में कौन कौन लोग थे, जिन जिन का भी नाम आपको याद है आप वो कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं सभी दर्शकों को फिर से कहना चाहूंगा, खास तौर पे अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं दिखाना चाहूंगा कि भगवान के लिए कि भगवान का पासपोर्ट माँ नंदशीला ने बनवाया। इसके अलावा उनकी जो इमिग्रेशन की जो सारी कार्रवाई थी, पासपोर्ट के अलावा जो है हमें वीज़ा चाहिए होता है, वो सब कुछ माँ ने करवाया। और भगवान की पूरी ज़िंदगी की, मतलब उस समय तक की पहली ज़िंदगी की फ्लाइट थी। उसके पहले भगवान ने किसी भी एरोप्लेन में सफ़र नहीं किया था। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो एक हाथ में भगवान के पानी का गिलास है और दूसरे हाथ में शैंपेन का ग्लास है, जिसमें माँ नंदशीला पोर कर रही हैं वाइन। और भगवान के सामने जो है शायद वो सीट पे, जो माँ ने अभी कहा, यहाँ पर देखिएगा चादर भी पीछे नजर आ रही है कि भगवान के पीछे वो चादर पड़ी हुई है व्हाइट कलर की, और भगवान सफेद रंग के वस्त्रों में हैं। भगवान खाना खा रहे हैं और साथ साथ में वाइन माँ को पोर करके दिए। माँ, वाइन को लेकर के मुझे याद है कि माँ ने भगवान ने आपको जो है वाइन का ग्लास दिया था, तो आपने एक सिप। That is right now is in his one hand. It is in his left hand. So first I asked him for champagne. I poured him champagne. Then he said, give me some wine. And I poured him wine then. ओके 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 माँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शायद वाइन या शैंपेन में से कुछ आपको दिया गया था, जो आपने एक सिप लेकर के आगे सब लोगों को यहाँ पर दिया। He gave me champagne, this on right hand. He took a sip, then he gave it to me, and then he gave me, after taking a sip of wine, also he gave me a glass of wine. जी माँ, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चलिए और भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बारी फिर से हमारे दर्शकों को, हमारे टीएनसी भगवान श्री चैनल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज हम 6000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं। तो ये आज का ही माइलस्टोन है। 31 मई देख ले, 2 ऐतिहासिक दिन आज हमारे लिए बेहद खुशी का मौका है कि एक ऐतिहासिक दिन 31 मई 1981, जी हाँ 1981, एक 31 मई, जिस दिन जो है भगवान यहाँ से हिंदुस्तान से अमेरिका के लिए रवाना हुए, उन्होंने प्रस्थान किया। साथ साथ में दूसरी खबर कि 6000 सब्सक्राइबर टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल के। तो मैं आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सब आपके बिना संभव नहीं है, नहीं था। तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं।
और कहूँगा कि आप ऐसे ही हमेशा साथ देते रहें। जल्द ही टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल भी सिर्फ़ और सिर्फ़ रह जाएगा भगवान श्री रजनीश चैनल। इसके लिए भी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। साथ-साथ में 13 जुलाई को 24 घंटे का फिर से पूरा का पूरा प्रसारण होने वाला है। इसके लिए भी आप हमारे साथ में बने रहिएगा, नज़र रखिएगा। अगर आप कम्यून चला रहे हैं या फिर संस्थापक हैं या फिर आप शिविर लेते हैं, तो आप सभी लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब लोग मुझे एंट्री अपनी भेज सकते हैं। हम आप सभी लोगों को 13 जुलाई के उस ऐतिहासिक प्रोग्राम में आप सभी लोगों को शामिल करना चाहेंगे। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर हमारा टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल का जो ऑफ़िशियल व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप लोग मिल कर के जी, तो मैं अभी आपके सामने जैसे ही वो आता है मैं भेजता हूँ। माँ से तब तक पूछते हैं, माँ उस दिन कौन-कौन सन्यासी या नॉन सन्यासिन जो आपको याद हो, वो आप बता सकें कि ये लोग शायद जी। I don't remember all of them. I truly have forgotten a lot of names because I've been out of touch till 2019, till I met you all. I have no contact with sannyasins or Rajneesh centers or anything. I have been living my own life and happily living my own life with my own memories and the wonderful big life that Bhagwan has offered me. And it is my father who encouraged me to speak and talk about my experience. That is the reason I talk now. So you, Raghav, have to thank my father, mother for that. थैंक यू सो मच टू देम, क्योंकि अगर वो शायद आपको इतना प्रोत्साहन नहीं देते, तो शायद आप इस कार्य को उस तरह से नहीं कर सकते थे। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें कि आपके वापस मतलब पिछले कुछ सालों में भी आपने जिस तरह से अपनी बातों को सामने रखा है, और जब तक आप नहीं बताएँगे तो या जो भी घटना से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान होता है, जब तक वो नहीं अपनी तरफ से बताएगा, तो शायद मुझे लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इन चीज़ों को बता सकें और आगे ला सकें। Raghav, the names are not important. You know, who was the people who were on first flight or the last flight of Bhagwan when he returned back. They know what happened to them. And if they didn't feel it, then it's not worth remembering. So I would say let's not go on the names. We were all sannyasins. It was a collective effort with the people who knew that Bhagwan was leaving India, and that collective effort, in it were people who didn't know also, because they allowed their lack of knowledge, which had helped Bhagwan's passage without incident. Otherwise, who knows what could have happened? So I say names are not important. And if you talk of names, then it will get to their head and say, oh, I was very close to Bhagwan because I lived so many years with him. No. We all lived together collectively with Bhagwan and still living with Bhagwan.
And that part makes Bhagwan special, and that makes us special. That we do not require this extra special to be that I was living with Bhagwan or I was doing that and that. We were together. It was an effort hand in hand. And I thank every one of them. I thank them then, but I again remember and thank them. That without them, I alone could not have managed it. So it is so much important that now we go as Bhagwan's people, call them what you want to, but go as Bhagwan's lovers, people, and let Bhagwan hear it wherever he may be, that we are there for him, even today, and for coming centuries. थैंक यू सो मच माँ। पर आखिर में चलने से पहले एक प्रश्न मैं और आपसे करना चाहूँगा कि भगवान जब प्लेन में बैठे और जब शैंपेन आप पोर कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर वो जो स्माइल, मुस्कान, इतनी खूबसूरत मुस्कान नज़र आ रही थी, वो शायद शैंपेन की तरफ देख रहे थे कि ग्लास कितना भर रहा है। शायद उनका पूरा ध्यान था उसके ऊपर। तो अगर मैं एक बार फिर से वो फ़ोटो दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। जी, तो देखिए आप भगवान का जो पूरा ध्यान है इसी चीज़ पर है और भगवान इतने खुश यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शायद इतनी खुशी थी उनको कि उसका ठिकाना ही नहीं था। उनको शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान ने जैसा आपने बताया कि भगवान ने बोला शीला माय मधुबाला और इसके अलावा भी कुछ भगवान ने कहा तो मैं चाहूँगा कि वो शब्द अगर आपको ध्यान है, तो आप प्लीज़ जो है हमारे दर्शकों या हमारे साथ में शेयर करें। All I can say after sharing the wine with sannyasins downstairs sitting, I came up to be ask Bhagwan if there is everything okay and so. And the way he said, Sila, I put my head on his feet and he touched my head, always the way he did it. And that was the biggest present he had given me again. There were words I don't remember anymore, except Madhubala had stuck to me. And this scene also, there were many photos were being done. This photo remains alive because it hangs even today in my bedroom. It hanged before in my bedroom in Rajneeshpuram. It hangs even today in my bedroom here. And there was a series of photos where Bhagwan would not just look at the champagne, but also looking at me, etc. But they are probably destroyed by people who try to amputate Bhagwan's this trip to US for their own purposes. बहुत-बहुत शुक्रिया माँ।
और इतनी खूबसूरत यादों को आज आपने यहाँ पर शेयर किया है। बेहद ऐतिहासिक दिन हम सबके लिए, जिस दिन भगवान का अमेरिका के लिए प्रस्थान हुआ। तो मैं आप सब लोगों को फिर से एक बारी बधाई देना चाहूँगा कि भगवान उस दिन गए और माँ आज हमारे साथ में है और माँ हमें आशीर्वाद भी दे रही हैं। साथ-साथ में वो पूरी जो खूबसूरत स्मृतियाँ, जो स्मृति चिन्ह उस दिन के थे, माँ ने पूरे के पूरे स्मृति चिन्ह बताए हैं। मुझे लगता है कि ये बेहद खूबसूरत यात्रा है। ऐसे ही ऐतिहासिक दिनों को भगवान के हम लेकर के आते रहेंगे और उसमें आपको यही कहूँगा कि बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया माँ आनंदशीला आपको, और ख़ास तौर पे हमारे तमाम जो दर्शक हमारे परिवार का जो हिस्सा है, टीएनसी भगवान श्री रजनीश का जो हिस्सा है, उन सब लोगों के लिए बेहद, बेहद, बेहद शुभकामनाएँ, क्योंकि आज हम 6000 फिर से हो गए। माँ चलने से पहले कुछ इस बारे में भी एक बार और कहना चाहेंगे कुछ? Well, all I can say, congratulations, Raghav. We all should make an effort to revive Bhagwan in our own ways. And Bhagwan can be manifested in many different ways. We are all talented, we are all courageous people. Let's shift our focus from Pune Ashram to Bhagwan Sri Rajneesh Ashram. थैंक यू सो मच माँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमें वापस पूना आश्रम को भगवान श्री रजनीश आश्रम बनाना है, रजनीश मोमेंट की तरफ लेकर के जाना है फिर से ही, जैसा भगवान ने शुरुआत में स्थापित किया था। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बारी फिर से, और कुछ 2-3 शायद मैसेजेस और हैं, मैं उनको यहाँ पर और डिस्प्ले करना चाहूँगा। जी, तो थैंक यू सो मच माँ, प्रणाम आपको। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि माँ की जो ये बात है, ख़ास तौर पे हमें दोबारा से स्थापित करना है रजनीशपुरम आश्रम। तो इसी तरफ हमें सबको ध्यान देना होगा, ताकि आगे चल कर के हम एकजुट होकर के, माँ ने पिछले दिनों में 19 जनवरी को नारा दिया था यूनाइट टुगेदर। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जैसा माँ ने कहा है यूनाइट टुगेदर को लेकर के, माँ नशीला फिर से हमारे साथ में है। मैं माँ एक बारी फिर से आपसे सुनना चाहूँगा कि यूनाइट टुगेदर हाउ? कैसे? From your own heart, unite together. Stop bickering about who does what and what does who. The Pune people are being a nuisance. Let them. Ignore them. When you ignore them, they will lose their energy. You continue your work the way you're doing, Raghav, and let others also continue their way of expressing Bhagwan. And create every home a Pune ashram. You live in a house, somebody else lives in an apartment, somebody else lives under the bridge, doesn't matter. Create ashram for yourself. थैंक यू माँ। मैं आपको सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने जैसे अंग्रेजी में कहा है, अगर आप उसे थोड़े शब्दों में हिंदी में भी कह सकें, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो देशवासी हैं, वो हिंदी भाषा ही समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर हिंदी में भी एक बारी अपनी तरफ से अपील करनी चाहिए माँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए हिंदी बोलना, मगर ये मैसेज भी इतना इम्पोर्टेंट है कि बिना कोशिश करके मैं चली जाऊं, ये भी ठीक नहीं है। हम सबको एक साथ जुड़ना है, हमारे प्यार से, भगवान के लिए जो हमारा प्यार है, उसके लिए हम सबको साथ जुड़ना है।
और फालतू बातों में नहीं पड़ना है। जो फालतू लोग हैं, जिन्होंने भगवान को लूटा है, कोई बात नहीं, उनको इग्नोर करना है। और जो हम कर सके भगवान को रिवाइव करने में, भगवान को वापस लाने में, फॉर सेंचुरीज टू कम, हमको करना है। राघव, मैं माफी चाहती हूँ, मेरा हिंदी इतना नहीं है। नहीं माँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में आपने कह दिया हिंदी में भी। हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे हमारे हिंदी भाषी जो हैं अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं। तो मैं उनसे फिर से, माँ ने जो कहा अंग्रेज़ी में, मैं उसे सिर्फ इतना सही कहना चाहूँगा कि माँ ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप इधर-उधर की बातों पे ध्यान ना दें, अपने पर फ़ोकस करें। हर इंसान अपने आप को कम्यून में स्थापित करे और साथ-साथ में यूनाइट टुगेदर, सबको एकजुट होना होगा, एक साथ होना होगा और अपने कार्य को अपने हिसाब से करते चले जाना होगा। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम शायद अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान के लिए काम करना है, तो भगवान के लिए आप जाग जाएँ और भगवान के लिए यूनाइट टुगेदर हो जाएँ, एक साथ इकट्ठे हो जाएँ, ताकि हर कार्य को करना बेहद आसान रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बारी फिर से माँ आनंदशीला, और साथ-साथ में टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल के तमाम सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से आपका प्यार मिल रहा है, बस ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहें। तो मुझे लगता है कि हम जल्दी ही जो है 10,000 की फैमिली पर आ जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। प्रणाम माँ। प्रणाम राघव। अब जी, मैं लॉग आउट। जी, जी लॉग आउट कर सकते हैं आप। थैंक यू माँ, प्रणाम। थैंक यू, टीएनसी बाय बदल बाय। रहा है, टीएनसी भगवान के रंग में रंग रहा है। टीएनसी लाइव अब है टीएनसी भगवान श्री रजनीश चैनल।